So you see, this course is number theory. So basically, so this is all the theory about numbers. So when we are saying numbers here, so these are natural numbers. So when I'm saying natural numbers, means all the positive integers, 1, 2, 3, 4, and so on. Is it fine, bache? Yes, ma'am. Okay. So now if you see, so you see, very, let us start with the very simple things which you already know in your junior classes. So there are very much concepts we all know, that is something called division algorithm. We all know something about GCD, LCM. We all know something about prime numbers. So when I'm saying GCD, so GCD means, so today we will just revise all these three concepts which you have already know, right? So I'll give you some results which we'll be using again and again, right? So when I'm saying GCD and LCM, so if you have two numbers A and B, then their GCD is say D. So what I'm saying is D is GCD. So GCD means greatest common divisor. So say suppose, so this GCD is denoted by open bracket. So open bracket AB means the GCD. So this means, say suppose I give you two numbers, say I give you 24 and I give you 36. So you see, so 24 के divisors कौन से हैं? So divisors of 24. मैम हाँ जी. मैम साक्षी वेटिंग पे है. Thank you. Thank you बेटा. Okay. So now divisors of 24 कौन से हुए? आप देखो, एक तो 1 divide करता है 24 को. 1 divides every number, right? So 1 divide करता है, then 2, then 3, then 4, then 6, then 8, then 12, then 24 itself. So अगर आपने एक और pattern, so you see this is the beauty of the numbers. They always have patterns. So you see what is happening. So if you see this is 1, so 1 के साथ 24 यहाँ आ गया. So 1 into 24 is 24. 2 का combination कौन सा है? 12. So it is here. 3 का combination कौन सा है? 8. It is here. 4 का combination कौन सा है? 6. It is here. So basically these are the divisors of 24. Similarly, what are the divisors of 36? So 1, so obviously somewhere here 36 will also come. Then 2, so here you will have 18, because 2 into 18 is 36. Then 3, so 3 ke saath it will be at 12. Then 4 ke saath it will be at 9. Then 6 will be itself. 6 into 6 is 36. Is it fine? So you see these are all the divisors of 36. So now if you see common divisors कौन से? Common divisors are 2, 3, 4, 6 and 12. And in सारे common divisors में से सबसे बड़ा divisor कौन सा है? That is the 12. So this 12 is nothing but the GCD of 24 and 36. So this is the greatest common divisor. So अगर मैं इसको आपको mathematically if I write, so what I'll write? I'll write so what I'll say, so GCD of A and B is equal to D if and only if. So what will happen? D is the divisor. So D will divide A. So when I'm denoting this small capital line means division. So D divides A.
D divides B. And if there is some C which divides A and C also divides B, then you see D is the GCD. So D is the greatest divisor. Then this C has to be less than or equal. Beta, is it clear? Yes, ma'am. ये आप लोग सब करते आए हो, right? And apart from that, so there are lot many ways by अगर आपको याद हो आप ये factorization method करते थे GCD निकालने के लिए, LCM के लिए और GCD के लिए हम division method करते थे. So let me just quickly recall that method. So हम क्या करते थे, आपको GCD निकालना है 24 और 36 का. एक मेथड तो हमने अभी देखा, फैक्टर्स निकाल लो, कॉमन फैक्टर्स, और उनमें से कॉमन उठा लो. अदरवाइज इफ यू सी, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. 24, दिस इज 124. सो व्हाट विल हैपन, 12 विल कम डाउन. अगेन जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं आता तब तक हम डिवीजन कंटिन्यू करते जाएंगे. So what will happen? So 12 रिमाइंडर आया तो 24 जो पहले जिससे आप डिवाइड करे थे उसको फिर से हम 12 से डिवाइड करेंगे. So 12 2s are 24. So you see remainder is 0. So we will solve, we will stop. So वो नंबर जिसने रिमाइंडर 0 दिया, so यहाँ पे रिमाइंडर 0 किसके कारण आया, रिमाइंडर 0 12 के कारण आया. So that number will be the GCD. So 24 36 GCD. Let me just take one more example because from here I want to give you one more concept. So say let us take maybe let us take 15 and 35. So obviously GCD will be 5. So let us see this. So what we will do, 35 bada number hai, so 15. So 15 2s are 30. So 5. Again 15 को 5 से divide करेंगे, so 5 3s are 15. So this is 1. Similarly, let us try to find the GCD of maybe 12 and 45. Okay, let us try this. 12 and 45. So same method we will use. So 45 and 12. So this will be 12. 3s are 36. So how much will come? 9. 9. Yes. So again 12. So again 9 1. So this will be 9. So this will be 3. So again remainder is not 0. So again we will continue. So 3 से हम 9 को divide करेंगे. So you see 3 3s are 9. This is, so what happened? 3 gave me remainder 0. So GCD of 12 and 45 will be 3. So you see now. So now here, from here I can give you one observation. So you see, I'll start from here. हम back से शुरू करते हैं. So now there was something called division algorithm, which we always use in our small classes. So what this algorithm says, if you have two numbers A and B, right? Say A is not equal to 0. So here in numerical number theory, I will say there are two numbers, there are two positive integers, rather I'll say A and B are positive integers. And if you divide A with B, आपने A को B से divide किया, or let me say if you divide B with A, so we divided B with A. So what will happen? We will get some quotient and we will get some remainder. So whenever you will divide one number with another number, you will get some quotient and you will get some remainder. So this is division algorithm. अगर आपको याद हो छोटे क्लासेस में आप यूज करते थे, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So you see this is nothing but division algorithm. So when you divide any two numbers, so what will happen? Either the remainder will be 0. So this remainder will be what? It will be either equal to 0
और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होगा. दिस रिमाइंडर इज व्हाट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन a. जब आपके पास ये रिमाइंडर 0 आ गया, देन ऑब्वियसली यू सी, so we say that a divides b if and only if b is equal to a into q. So b can be written as some, so b is some multiple of a. So b is equal to a into q. So here what happened? Here remainder is 0. So जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 12 into 2. So it means 12 divides. So you see any number 24, it is what 12 into 2, or it is what 4 into 3. 4 into 6, or it is what 8 into 3. So from here you see 12 divides 24, 2 divides 24, 4 divides 24, 6 divides 24, because if any number b can be written as a into k, so a also divides b and k also divides. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right? So here again let me give you some simple notations. This means a divides b. So this means a divides b. So when I'm saying a divides b means b is what a into k, where k belongs to z. So b is equal to a into k, right? So here this a or k, they are known as factors or divisors of. बेटा क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके. सो हमने अभी ये जो आपने अभी नीचे हम डिवाइड कर रहे थे, हमने 45 और 12 का जीसीडी निकाला था. तो ये हमारे पास यहाँ पे था. सो 12 2 36 आया था. सो अल्टीमेटली 3 और 3 ने 0 बना दिया था, तो हमने कंक्लूड किया था 12 और 45 का जीसीडी इज 3. सो फ्रॉम हियर इफ यू सी, मैं पीछे से लास्ट डिवीजन से शुरू हो रही हूँ. लास्ट डिवीजन में हमने क्या किया था, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 क्वोशंट आया और 0 रिमाइंडर आया. यही हुआ था लास्ट में, है ना? Yes, ma'am. उसके ऊपर क्या हुआ था, उसके ऊपर 12 वाज द डिविडेंड. 12 को हमने 9 से डिवाइड किया था, क्वोशंट आया था 1 और रिमाइंडर आया था 3. फिर सबसे पहले क्या हुआ था, हमने 45 को 12 से डिवाइड किया था, क्वोशंट आया था 2 और रिमाइंडर आया था 9. राइट? सो मैंने उल्टा लिखा है. सो आई हैव रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, सबसे ऊपर देन सबसे लास्ट, देन उससे ऊपर, देन उससे ऊपर. सो यू सी व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम हियर. सो अभी हमारे दिमाग में एक चीज है, that the GCD of 12 and 45 is 1. GCD of 12 and 45 is 3. I'm sorry. GCD of 12 and 45 is 3. So I want, what is there in my mind? I want to write 3 in terms of 12 and 45. So basically मुझे 3 की वैल्यू चाहिए. So मुझे 3 निकालना है. Okay. So before I move further, अब देखो आप, मुझे 3 की वैल्यू चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज से जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज से डी. सो व्हाट आई वांट टू शो फ्रॉम हियर इज देयर exist integers x and y such that d can be written as ax plus b. That is, GCD is linear combination of A and B. So from here what we are going to show is कि किसी भी दो नंबर के GCD को हम नंबर के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. आई मीन कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐड करके आपको GCD मिल जाएगा. So for any two integers A and B, there exist integers x and y such that GCD D is equal to AX plus BY. Is the motive clear? What I want to show is it fine?
तो मुझे D को इन टर्म्स ऑफ A एंड B लिखना है। तो अगर आप देखो अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था वो क्या लिया था, 12, A was 12, B was 45 एंड GCD हमने निकाला था 3. तो what I want to write to prove there exist integers x and y such that GCD कितना है 3, A कितना है यहाँ पे 12x प्लस 45. तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x और y की वैल्यू है ये मुझे यहाँ से मिली, ये जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया है। अच्छा, इससे पहले बेटा एक चीज हमेशा याद रखनी है। अब अगर आप देखो, आप यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, आप मुझे 3 की वैल्यू चाहिए, आप मुझे बोलोगे कि मुझे 3 यहाँ से भी मिल सकता है, मुझे डायरेक्टली 3 यहाँ से भी मिल सकता है। बेटा हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, हम नंबर थ्योरी कर रहे हैं। अब जब भी मैं नंबर थ्योरी की बात करती हूँ, नंबर थ्योरी का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला नंबर थ्योरी मींस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 सो ऑन। सो यू सी, अगर आप 12/5 लिखते हो, this will not come in number theory because number theory only deals with natural number. तो आप उन्हीं नंबर्स के बारे में, तो अगर आप कहीं पे 12/5 लिख रहे हो तो means you are wrong in your proof. If you're writing some this kind of number, these are rational numbers, these are not natural numbers. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So what I mean to say from here is कि suppose मैं कोई ऐसा एग्जांपल लेती जहां पे suppose मेरे पास आ जाता, जैसे suppose आप any one step से आपके पास होता 15 is equal to, not 15, rather say I write this equation, 15 is equal to 3 into 5. Right, so from here, yes, I can say 15 is equal to 5 is equal to 15/3 because 15 is divisible by 3, so this is 5. So this is fine. You are in numbers, you are in natural numbers. But if you have any number of this form, say 21/8, so you see this will not make sense. So you have to be very careful whenever we are doing number theory. We will never bring fractions in picture, right? So now let us do this. So what I want is, I want to find the value of 3. तो मुझे दिख रहा है, if I say the second equation, if you see the second equation, from second equation, what is the value of 3? The value of 3 is 12 minus 9. So again, if you see, मुझे numbers कौन से हैं, मुझे 12 और 45 चाहिए, but मेरे पास 12 तो आ गया है, मैं 12 तो मुझे मिल गया, but अभी मुझे 45 नहीं मिला। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन है वो दिख रही है, लास्ट इक्वेशन मुझे 9 की वैल्यू मिल जाएगी। So what is the value of 9? What is the value of 9? So 12 minus, what is the value of 9? 45 minus 12 into 2. If you see, मैंने क्या किया है, मैंने 12 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया है बिकॉज मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे 12 और 45 चाहिए। अगर मैं 12 into 2 कर दूंगी तो मेरा 12 चला जाएगा, 24 आ जाएगा, बट मुझे 12 चाहिए, तो वी विल नॉट मल्टीप्लाई, वी विल जस्ट कीप द नंबर्स एज सच। सो नाउ इफ यू सी, इफ आई ओपन दिस, इफ आई ओपन, सॉरी, so if you see, I have just written this, so this is 45. So you see, what is this? So if I open this now, so this is 12 minus 45. So again, minus will become plus. 12 multiplied by 2. So instead of multiply, I'm just writing dot. So if you again see, 12 is common. So इस वाले 12 के साथ 1 है, इधर क्या है 2. So 1 plus 2 minus 45. So finally what I get? So 3 is equal to what? 3 is equal to 12 into 3. I have done something wrong anywhere.
Beta, am I audible? Yes, ma'am. So you see, this is 12 into 3. So here it will be 3. Here it will be 3. So this is 3 plus 1. This is 4. So what is happening? So this will be 12 into 4. And if I want to find the number, I can write this as 45 or minus 1 मैंने इसके साथ लिख दिया. So you see what we have shown. 3 was D. So what you have, D is equal to, so what we have, D is equal to AX plus BY. So from here X की value कितनी आ गई 4 and Y की value आ गई कितनी -1. So we have found the integers X and Y such that 3 can be written as linear combination of 12 and 45. And this is true for all the integers. So basically we will be using this result many number of times, that अगर आपके पास कोई दो integers है A and B और उनका GCD D है, so D can be written as linear combination of these two integers. So D is AX plus BY. But is it fine, all of you? Yes, ma'am. And similarly, agar if I say, okay, if I say, so can you tell me from here, if I say any two numbers A and B, their GCD is 1. If I say any two numbers have GCD 1, so it means what? A and B are, they are co-prime. So co-prime numbers are which numbers whose GCD is 1? Is it clear, beta? So अगर आपके किसी number का GCD आपस में 1 है, so these two numbers are known as co-prime, right? And similarly, you know what are prime numbers? What are prime numbers? What are prime numbers? Ma'am, the one and the number itself. Right, so those numbers whose factors are 1 and the number itself. Right, so this was something which you have, I think all ये सारा आपने algebra उसमें किया था ना group theory में. बेटा ये सब कुछ डिस्कस हुआ था group theory में. Yes, ma'am. Right, so with all this background, so we'll be starting with the very first chapter of your number theory, that is the Diophantine equation. So I'll be doing that chapter Thursday onwards. Is it fine, बच्चे? So any doubt for these basics? Clear है बेटा सबको?